Welcome back to this session. So today in this session we will be solving more numericals for simply supported beam and find a shear force and bending moment diagram. So let us get started with the first numerical. A simply supported beam of span 5 meter carries a UDL of 20 kN per meter over 4 meter length from the left hand support and a point load of 50 kN at 2 meter from right hand support. Draw SFD and BMD. Now in this case, beam loaded with the loads, the diagram is not given. We have to read only the statement is given, so we have to read the statement, and from the statement we need to draw the beam along with its loading. So let us get started. So it is a simply supported beam of span 5 meter. Simply supported beam of span 5 meter. Its total span is 5 meter and carries a UDL of 20 kN per meter over 4 meter length from left hand support. So this is my left hand support and it carries a UDL of 20 kN per meter over a span of 4 meter. So till here, let us say it is still here 4 meter. So this span here is 4 meter. Okay, and its intensity is 20 kN per meter, right? So next we have and a point load of 50 kN from right hand support. So from right hand support to at the distance of 2 meters. So if from here to here I have 1 meter, so 2 meter around here. Okay, so 2 meter. The intensity of this load is 50 kN and this distance from here to here is 2 meter. Okay, and let me name this as A, B and C point. Now let us first start by finding its reaction. Reactions. So it will be equal to RA plus RB equals to the total load on the beam, which is 20 into 4 UDL plus the point load. This will be coming equal to RA plus RB will be equal to 130 kN. Now next, from summation of moment about A equals to 0. So from here my reference point is this point here. So from here RA into 0, since A is the starting point. Then next 20 kN per meter load will be going clockwise direction towards A. So it will be going clockwise direction, right? So I have plus 20, clockwise means positive, plus 20 into what is its distance? It is 4 meter into 4 by 2 for UDL. Plus next I have point load 50 kN into, now what is the remaining distance from here to here? If from here to here is 2 meters, so the remaining will be 3. So 50 into 3 minus, next I have reaction RB here, right? So here I have RA and here RB. So it will be RB will be going in this direction towards A, and this direction is anti-clockwise direction. So minus RB into the total distance 5 equals to 0. Now if I cancel from here, I'll be getting 20 into 4 into 2 will be equal to 160 plus 50 into 3 will be 150 equals to, now I'm sending this to right hand side, so it will be 5RB. Now adding this 2, I'll get 310 equals to 5RB. And from here
reaction RB will be equal to 310 divided by 5. This will be coming equal to 62 kilonewton. Now by using this equation here I can find RA. So RA will be equal to 130 minus 62, which will be coming equal to 68 kilonewton. So we have found the reactions. Now let us find the shear force. Number 2, shear force calculation. Okay, so for shear force we have found reaction RA and RB, right? Now from here, force at A will be equal to, now whatever force is going from bottom to top is plus, top to bottom minus, right? So in A point I have first reaction RA going from bottom to top, so this is positive, so I have plus RA, which is 68, and from top I have a reaction 20 kilonewton per meter coming from top to bottom, so I have minus 20. Now अभी यहाँ पर शुरू ही हुआ है UDL, तो उसका डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस will be 0. So here force at A will be equal to 68 kilonewton. Okay, next let us find force at C and to the left hand side of C. So what was the last force we found? Last force we found is 68 kilonewton, right? So 68 minus, यहाँ पर C तक यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर कौन सी लोड आ रहा है? UDL ऊपर से आ रहा है, तो UDL 20 इंटू, नाउ A से चलकर C तक चला है. अब ये डिस्टेंस कितना है? अगर यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है तो this distance here is 1 meter. From C to D we have 1 meter distance, so till C, from A to C the distance is 3 meter, so I have 20 into 3, right? So this will be coming equal to 8 kilonewton. Okay, next let us find force at C and to the right hand side of C. The last force that we found is 8 kilonewton minus, now जब हम राइट की तरफ देखते हैं तो C के ऊपर जो 50 kilonewton लोड लग रहा है वो हम राइट पे लेके जाएंगे. सो ऊपर से आ रहा है तो इट इज़ माइनस, सो 8 माइनस 50 माइनस, अब ये UDL यहाँ से यहाँ तक थोड़ा 1 मीटर डिस्टेंस पे चला है, तो अभी C पॉइंट पे UDL शुरू ही हुआ है, तो माइनस 20 इंटू उसका डिस्टेंस 0 रहेंगे. Okay, so from here 8 minus 50 will become equal to minus 42 kilonewton. Okay, now let us find force at D. Force at D left hand side will be equal to, last force that we found is minus 42 minus, now आप यहाँ पर C D पे जब हम पहुँचते हैं तो ये 1 मीटर पे, टोटल 1 मीटर लेंथ पे UDL चला है, तो UDL इज 20 और उसका डिस्टेंस अभी 1 हुआ, सो minus 42 minus 20 will be coming equal to minus 62 kilonewton. Okay, now आप हम force at B फाइंड करेंगे, तो force at B फाइंड करेंगे, तो अब देखो is there any force acting from D to B? कोई force है? कोई भी फोर्स नहीं है, तो जो लास्ट डी पे आया है कितना आया है? माइनस 62 आया है, वही बी पे भी सेम रहेंगे, तो आया है माइनस 62 kilonewton विच इज इक्वल टू माइनस आर बी. सो आवर calculation of shear force is correct till here. Okay, now let us draw the shear force diagram. I'll draw a line here. Now shear force at A is 68 kilonewton, 68 kilonewton here. Then shear force at C is 8 kilonewton, so I'll draw here 8 kilonewton. Let me join it.
8 किलो न्यूटन। अभी फिर सी पॉइंट पे ही राइट हैंड साइड डायरेक्शन पे हम जब जाते हैं तो उस पे माइनस पे गया है, -42। सो वट एवर you draw below this line will come in negative. So -42, let us mark it somewhere around here, -42. So this is 42 kilonewton. Okay, so let me join this line, 42, right? अब D पॉइंट पे कितना आया है, -62। तो मेरा ये D पॉइंट है, तो ये मैं D पॉइंट को यहाँ पर -62 मार्क कर लेती हूँ। सो दिस इज 62 किलो न्यूटन, और B पे भी, ये पॉइंट पे भी 62 किलो न्यूटन है। सो यहाँ पर भी 62 सेम लाइन पे आएंगे। तो मैं ये ज्वाइन करके यहाँ पर ज्वाइन करती हूँ, और हेयर, राइट, देन ज्वाइन दिस लाइन हेयर। So this one below this line is all in minus, above this line is all in plus. Let me shade it. So this is your shear force diagram. Okay, now similarly let us find bending moment for this diagram. So number 3, bending moment calculation. So the bending moment calculation here, since ये simply supported beam है तो supports पे 0 आएंगे, और supports कौन कौन से है, A और B supports है। तो moment at A equals to moment at B will be equal to 0. Okay, now हम moment at C find करेंगे। moment at C मतलब ये point पे, तो ये पॉइंट पे हमें फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड हम जाएंगे, लेफ्ट से राइट तक जाएंगे। तो फर्स्ट फोर्स कौन से है, मोमेंट क्या है, मोमेंट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जो भी फोर्सेस है उसके साथ हम डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके जाएंगे तो वी विल गेट मोमेंट। ओके, सो what do we have? First force that we have is reaction RA. So reaction RA towards C will go in this direction, right, which is clockwise direction. और ये जो 20 किलो न्यूटन लोड है ये C की तरफ कैसे जाएंगे, ये ऐसे जाएंगे, और ये कौन सी डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो लेट अस फाइंड मोमेंट एट C. सो आई हैव 68 इंटू डिस्टेंस क्या है C तक 3, राइट, और 20 किलो न्यूटन per meter load is going in a anti-clockwise direction. So -20 into distance is 3 into 3/2, क्योंकि ये UDL है। तो ये करने से we reach at point C. तो यहाँ पर कितना आएंगे, moment at C will be coming equal to 114 kilo Newton meter. Okay, now similarly मोमेंट एट D विल बी इक्वल टू, नाउ हमें ये पॉइंट पे फाइंड करना है, D पॉइंट पे। तो सिमिलरली यहाँ से फिर हम यहाँ तक जाएंगे, और जो डायरेक्शंस ऑफ लोड है ये जैसे C पे गया है वैसे ही जाएंगे D पे भी, सिर्फ उसका डिस्टेंस चेंज होगा। तो फर्स्ट फोर्स कौन सी है, रिएक्शन RA 68 इंटू, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम A टिल D कितना है, 4 मीटर। सो 68 इंटू 4 minus UDL will go in anti-clockwise direction, so -20 into distance is 4 into 4/2. अब हमने ये और ये रिएक्शन RA और UDL का हमने लिया है। अब C पॉइंट पे आकर एक पॉइंट लोड लग रहा है, ये पॉइंट लोड भी D के तरफ कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, और ये कौन सा डायरेक्शन है, anti-clockwise direction. So I have -50 into, now C से लेकर D तक कितना है डिस्टेंस, 1 मीटर। So 50 into 1, it will be coming equal to 62 kilonewton meter. Now let's draw a bending moment diagram. Okay, so at point A and B 0 है, A and B पे
बेंडिंग मोमेंट्स आर 0. सी पॉइंट पे कितना आया? सी पॉइंट पे, ये मेरा सी पॉइंट पे 114 किलो न्यूटन मीटर, राइट. और डी पॉइंट पे कितना आया? 62. तो यहाँ पर 62. और यूडियल है तो फॉर मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, इट विल बी पैराबोला. सो यू ड्रॉ अ पैराबोला, यहाँ तक पैराबोला. अब यहाँ से कुछ भी नहीं है तो यू नीड टू गो अ स्ट्रेट लाइन. Okay, so this is positive shaded, and this is your bending moment diagram. So I hope this numerical is clear. Let us solve the second numerical. Draw the SFD and BMD for the beam as shown in the figure below. Indicate on the diagram the values of shear force and bending moment at significant points. Find and show the location and magnitude of the maximum bending moment. So in this case, the diagram of the beam is given, and for this beam, for this simply supported beam, we need to find shear force and bending moment diagram, and then once we finish drawing the shear force and bending moment diagram, we need to, for each values of shear force and bending moment, each point we need to specify its values. Then after that, we need to find the location and magnitude of maximum bending moment. So where does the maximum bending moment occur? Maximum bending moment occurs at a point where a shear force suddenly changes its sign from positive to negative, and that point is known as a point of contra shear. So we need to find the point of contra shear and then find the maximum bending moment at that point. So let us get started. For second numerical, the diagram is already given as shown in the figure here. Now let us start with finding its reaction. Number 1, reactions. Right, so I have here RA and here RB, right? So reactions will be RA plus RB will be equal to total load on the beam. So what is the total load? I have only UDL acting on this beam, so 10 into 2 plus 20 into 2. So I have 10 into 2 and 20 into 2. So this will be equal to RA plus RB will be equal to 60 kilonewton. Okay. Now from summation of moment about A equals to 0, I'm taking again the reference point A point here. So here RA into 0. Now how will this 10 kilonewton per meter load go? It will go in this direction. So what direction is this? This is a clockwise direction. So I have plus 10 into 2 into 2 by 2. Right? Next I have 20 kilonewton per meter load. ये भी कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे. कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो भी प्लस. सो क्या होगा? 20 इंटू 2 मीटर पे लग रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर लोड भी 2 मीटर, और बाकी का डिस्टेंस अब यहाँ से हमें ए तक जाना पड़ेगा, तो ये 2 मीटर डिस्टेंस भी हमें लेना पड़ेगा. तो कैसे लेंगे? इनटू दिस 20 किलो न्यूटन पर मीटर लोड विल एक्ट एट द मिडल स्पैन, सो 2/2 प्लस उसका रिमेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर प्लस 2. Okay, so this will be, and then next we have RB. अब RB कैसे जाएंगे? RB ऐसे जाएंगे, और ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो हुआ माइनस RB इंटू टोटल डिस्टेंस 4 मीटर इक्वल्स टू 0. राइट, तो इसको कैंसिल करो और यहाँ पर क्या आएंगे? 20 प्लस कैंसिल करो
1 plus 2, 3, 3 into 2, 6, 6 into 2, 6 into 20, it will come 120 equals to, now I'm sending this into the right hand side direction, so it will be 4 RB. This will be coming equal to 140 equals to 4 RB. RB will be equal to 140 divided by 4. This will be coming equal to 35 kilonewton. So we found reaction RB. Now let us find RA from this equation here, right? So from here RA will be equal to 60 minus 35, which will come equal to 25 kilonewton. Now let's find shear force, right? Number 2, shear force. Shear force calculation. Okay, for shear force we have at this point force at A. Force at A will be equal to, फर्स्ट हमारा फोर्स कौन से है, आर ए है, तो आर ए कहाँ से जा रहा है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सो दिस इज पॉजिटिव 25 और ऊपर से 10 किलो न्यूटन लोड आ रहा है, तो ऊपर से जो आते हैं माइनस भी लेते हैं हम, तो -10 इंटू अभी ये यूडीएल यहाँ पर ए पॉइंट पे शुरू ही हुआ है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा 0, सो 0, दिस विल बी कमिंग इक्वल टू 25 किलो न्यूटन. Now force at C point and left hand side of C. So left hand side of C will be here. Okay, तो वहाँ पर कितना आएंगे, लास्ट पे हमें 25 मिला है, 25 माइनस C पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक अभी यूडीएल चला है 2 मीटर पे, ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल चला है, तो इट विल बी 10 into 2. Now its distance is changing, it is 2 now, right? So this will be coming equal to 5 kilonewton. Now let us find force at C and right hand side of C. Now right hand side of C will be towards this direction. So let us see, last load that we got is 5 minus I have a UDL running, right? तो UDL यहाँ पर 20 किलो न्यूटन पर मीटर का UDL चल रहा है, और ये C पॉइंट पे अभी शुरू ही हुआ है, तो it will be 20 into 0. So it will be 20 into 0. This will come equal to 5 kilonewton. Now force at B, the last point. So force at B will be equal to, last we got 5 minus we have 20 kilonewton per meter UDL into its distance will be 2 now. So this will be coming equal to minus 35 kilonewton, which is equals to minus RB. So again our calculation is right till here. So let us draw the shear force diagram. I'll draw this line. Now at A I have 25 kilonewton, 25 kilonewton here, 25 kilonewton. At C, at this point I have 5 kilonewton, so 5 kilonewton. Let me join the lines. Right, now C to the right hand side direction, again I have 5 kilonewton load only. So when it is going to the right hand side, it is remaining at the same direction here, and when it is going to this B here, it is directly going in minus 35. So let me mark minus 35 around here. This is my 35 kilonewton. Okay, so I join this line, this, and then this. So this here is negative, positive. Let me shade it.
right? So this is my shear force diagram. Now as you can see here, ये point पे suddenly shear force का sign change हो रहा है. अभी यहाँ तक positive था and suddenly it is going to negative. So what is this point? This is a point of contra shear. Okay, and let me name this point as point D. Now at this point, bending moment will be maximum. So before we find the bending moment, we need to find this distance. Because we do not know this distance, we need to find this distance, then only we can find the moment at D. Now let us find third one, bending moment calculation. So for a simply supported beam, moment at A and moment at B, which are supports, will be equal to 0. Moment at A, moment at B will be equal to 0, right? Up, moment at C will be equal to, अब ये कैसे जाएंगे ये towards C clockwise direction पे, और ये 10 किलो न्यूटन लोड कैसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे. तो RA is going clockwise, so it is positive 25 into, और डिस्टेंस C तक कितना है 2, माइनस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 10 into 2/2, राइट. अब इससे आपको मोमेंट एट सी आपको मिलेगा 30 किलो न्यूटन मीटर. ओके, अब हमें फाइंड करना है मोमेंट एट डी. अब मोमेंट एट डी फाइंड करने के लिए हम सिमिलर ट्रायंगल मेथड यूज़ करेंगे. ओके, सो मैं ये जो यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसका मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ. राइट, सो हियर इट इज़ 35 एंड हियर इट इज़ 5 और वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस. ये कितना है x रखेंगे और इसको हमें पता है यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट क्या है, दिस इज C पॉइंट और ये B पॉइंट है, और C से B तक कितना है 2 मीटर डिस्टेंस पे है, और ये क्या होगा 2 माइनस x, यही होगा ना. तो नाउ फ्रॉम हियर लेट अस सॉल्व बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड. इट विल बी x बाय 5. फॉर दिस triangle number 1 will be equal to triangle number 2. So x ये triangle का ये distance हुआ और ये triangle number 1 का height हुआ, will be equal to triangle number 2 का distance क्या है 2 minus x divided by, और ये उसका height 35. Now cross multiply करने से it will be 35 into x, 35x equals to 5 into 2 minus x. ओके, नाउ यहाँ से फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएंगे 35x इक्वल्स टू 5 2 is 10 माइनस 5x, ये आएंगे. अब ये 5 को मैं उधर लेके जाऊँगी तो क्या होगा 35x प्लस 5x इक्वल्स टू 10, राइट. तो यहाँ से क्या होगा 35x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 40x इक्वल्स टू 10, राइट. अब यहाँ से x will be equal to 10/40, so it is coming 1/4. 1/4 is equals to 0.25 मीटर. तो अभी हमें x का वैल्यू मिल गया है, कितना आया है, so this x is equal to 0.25 मीटर. अब we can find moment at D. So moment at D will be now equal to, अब हमें कहाँ पर फाइंड करना है ये पॉइंट पे. अब मैं यहाँ से थोड़ा सा लाइटली मार्क करती हूँ, तो ये ऊपर कहाँ पर आएंगे, लेट्स सी, ये पॉइंट पे आएंगे समवेयर अराउंड हियर D पॉइंट, राइट. तो फिर हमें कहाँ से कहाँ तक आना पड़ेगा, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड लेकर यहाँ तक जाना पड़ेगा, राइट. और डिस्टेंस क्या होगा 2 प्लस इतना डिस्टेंस, और इतना डिस्टेंस कितना आया 0.25. सो अभी जैसे C पॉइंट पे फोर्सेस का डायरेक्शन
गया है वैसे सेम ही रहेंगे डी के लिए भी. सो दिस विल बी clockwise direction and anti-clockwise direction. So let us find 25 into, अब डिस्टेंस ही चेंज होगा तो डिस्टेंस कितना होगा 2 प्लस 0.25 विल बी इक्वल टू 2.25 मीटर माइनस 10 into, अब 10 kilonewton per meter load is acting only till 2 meter load, 2 meter distance. अब ये 10 kilonewton per meter load 10 kilonewton per meter load 2 मीटर पे ही चल रहा है, तो बाकी का 0.25 मीटर हमें एडिशन करके लेके जाने पड़ेगा. तो कैसे होंगे 10 into 2 into 2/2 प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस 0.25, राइट. और फिर यहाँ सी पर पहुँचकर ये पॉइंट पे पहुँचने के लिए फिर से और एक लोड आ रहा है ऊपर से, ये 20 kilonewton per meter लोड भी ऊपर से आ रहा है. तो ये कैसे जाएंगे, ये डी के तरफ, ये इट विल गो इन दिस डायरेक्शन विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगेन, राइट. सो आई हैव अगेन -20 इंटू, अब डिस्टेंस सिर्फ इतना ही है 0.25. सो 20 इंटू 0.25 into 0.25 divided by 2. So if you solve all of these, moment at D will be coming equal to 30.625 kilonewton meter. Now compare moment at C 30 आया, moment at D 30.625 आया. So ये point of contrast shear पे bending moment maximum आना चाहिए. So we got maximum bending moment at point D. Now let us draw the diagram. So at A and at B the moments are 0 support होने की वजह से, और moment at C point पे 30 आया. So let us mark somewhere around here 30, right. और ये D point पे 30.625 थोड़ा सा ऊपर. अब यहाँ पर क्या है, पूरा इट इज़ UDL. अगर पूरा UDL है तो इट विल कम पैराबोला. सो आई ड्रॉ पैराबोला लाइन. सो आई हैव अ पैराबोला इन दिस मैनर. ओके, दिस वन हियर इज 30 kilonewton meter, here is 30.625 kilonewton meter, and this is positive of, this is my bending moment diagram. This is the last numerical for today's session. So let us read its statement. Draw shear force and bending moment diagram for the beam as shown in the figure below. Indicate on the diagrams the values of shear force and bending moment at significant points. Find and show the location and magnitude of the maximum bending moment. So in this question also, just like in question number 2, the diagram is given, and similarly we need to find shear force and bending moment and also locate the magnitude of maximum bending moment. So let us start solving the numerical. So the diagram is given as shown in the figure. Let us solve this. Let us first find the reaction. Number 1, reactions. Right? So I have here RA and here RB. Right? So total reaction will be equal to total load on the beam. So what is the total load? First we have UDL into 1.5 meter plus point load 50 plus another point load 60 plus 15 kilonewton per meter UDL. 15 into distance is 1.5, और इसको आप सब प्लस करेंगे तो RA plus RB will be coming equal to 162.5 kilonewton. Okay, now यहाँ से summation of moment about A equals to 0 लेके जाएंगे. So मेरा reference point यहाँ पर A है अभी.
तो रिएक्शन आर ए इंटू 0, क्योंकि यहाँ पर शुरू ही हुआ है। अब ये यूडीएल कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये पॉइंट लोड भी कैसे जाएंगे, टुवर्ड्स ए के तरफ। ऐसे तो जा नहीं सकते, ये ऐसे गए तो बी की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे जाएंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये 60 किलो न्यूटन लोड भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे, और ये लोड जो यूडीएल है ये भी ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे। सो पूरा लोड यहाँ पर अभी ए की तरफ क्लॉकवाइज पे जा रहा है, सो पूरा पॉजिटिव पे आएंगे। सो प्लस 20 इंटू 1.5 प्लस 50 इंटू 1.5 ओ हियर, यहाँ पर यूडीएल है तो इसके इंटू 1.5 की डिस्टेंस आधा पे एक्ट होगा। ओके, सो दिस इज पॉइंट लोड के लिए सिर्फ फोर्स इंटू डिस्टेंस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट अगेन वी हैव पॉइंट लोड प्लस 60 इंटू, अब डिस्टेंस क्या है यहाँ से 60 से ए तक, सो 1.5 प्लस 1.5 3 मीटर, प्लस नेक्स्ट आई हैव 15 किलो न्यूटन पर मीटर लोड, सो इट विल बी 15 इंटू, उसका डिस्टेंस 1.5 है, इंटू इट विल एक्ट एट 1.5 डिवाइडेड बाई 2, प्लस अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, रिमेनिंग डिस्टेंस इज 3 मीटर, सो प्लस 3 माइनस, अब ये आर बी कैसे जाएंगे ए के तरफ, ये ऐसे जाएंगे, और ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो माइनस आर बी इंटू द टोटल डिस्टेंस इज 4.5 meter equals to 0. So we have this. Now from here, solving this portion, you will get 20 into 1.5 into 1.5 by 2 will become equal to 22.5 plus 50 into 1.5 will be 75 plus 60 into 3 180 plus 15 into 1.5, ये पूरा सॉल्व किया तो इट विल बी कमिंग इक्वल टू 84.375। अब मैं ये आर बी को राइट हैंड साइड पे लेके जाती हूँ तो इट विल बी इक्वल टू, अभी यहाँ पर माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो 4.5 आर बी। सो अगर आप ये पूरा को प्लस करते हो तो दिस वैल्यू विल कम इक्वल टू 361.875 इक्वल्स टू 4.5 आर बी। Now from here RB will be equal to 361.875 divided by 4.5, and this will come equal to 80.42 kilonewton. Similarly, reaction RA will be equal to 162.5 minus 80.45, and this will come equal to 82.08 kilonewton. So we have both the reactions. Let's find shear force now. Number 2, shear force calculation. Okay, so remember, force is coming from bottom to top plus top to bottom minus, right? So फोर्स एट एफ ए, फोर्स एट ए मीन्स ये ए पॉइंट पे कितना आएंगे, सिर्फ रिएक्शन आर ए है और ऊपर से यूडीएल है, और यूडीएल ए पॉइंट पे शुरू ही हुआ है, राइट? तो आई हैव 82.08 प्लस एंड ऊपर से यूडीएल आ रहा है तो माइनस 20 इंटू उसका डिस्टेंस, शुरू ही यहाँ पर ए पे शुरू हुआ है तो डिस्टेंस 0 रहेंगे, 0, सो दिस इज इक्वल टू 82.08 kilonewton. Next I have force at C and left hand side of C. So left hand side of C will be this direction, right? So last force that I got is 82.08 minus 20 into, अब C तक पहुँचते ही ये UDL कितना रन हुआ है, for a distance of 1.5 meter. So the distance changes here and becomes 1.5, and this will be equal to 52.08 kilonewton.
नाउ सिमिलरली फोर्स एट सी एंड राइट हैंड साइड ऑफ सी. अब ये सी पॉइंट के इधर जाएंगे हम राइट हैंड साइड. तो लास्ट फोर्स कितना आया है 52.08 और सी के ऊपर 50 किलो न्यूटन लोड लग रहा है और ये हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे. तो -50 एंड दिस विल कम इक्वल टू 2.08 किलो न्यूटन. राइट. अब हम फोर्स एट डी लेफ्ट हैंड साइड, डी का लेफ्ट हैंड साइड पे फाइंड करेंगे. तो क्या होगा फोर्स एट डी लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू लास्ट फोर्स दैट वी गॉट इज 2.08. इज देयर एनी फोर्स इन बिटवीन सी एंड डी? देयर इज नो फोर्स इन बिटवीन सी एंड डी. सो जो फोर्स आपने सी का राइट हैंड साइड पे मिला है वो इट विल रिमेन सेम. सो फोर्स एट डी लेफ्ट हैंड side will be 2.08 only. Next, let us find force at D right hand side. Last force that we found is 2.08. Now, D का right hand side इधर जा रहे तो at D point exactly 60 kilonewton load is acting, which we will consider in right hand side direction. So -60 and UDL is acting -15 और उसका डिस्टेंस क्या है अभी डी पे शुरू ही हुआ है. राइट. सो उसका डिस्टेंस 0. सो वी हैव 2.08 minus 60 will be equal to minus 57.92 kilonewton. Next, let us find force at B point. Last force that we got is minus 57.92 minus, now ये B तक पहुँचते UDL 1.5 मीटर रन हुआ है. So 15 into 1.5. So this will be coming exactly equal to minus 80.42, which is equal to minus RB. This reaction is right again. Right, now let's draw the shear force diagram. Okay, so A point पे I have 82.80. So I have 82.08 kilonewton और C का लेफ्ट हैंड साइड पे 52 थोड़ा कम हुआ है. सो ये यहाँ पर 52.08 kilonewton एंड C का राइट हैंड साइड पे. अब ये C का जब उधर राइट हैंड साइड पे जा रहा है तो वही पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पर 2.08 kilonewton हो रहा है. राइट. सो लेट मी जॉइन दिस लाइन्स here, from here to here, then join here. Now D left hand side पे जा रहे हैं हम. कहाँ पर जा रहे हैं? C का right hand side तक इतना आया. अब D point पे, ये point पे जा रहे हैं तो ये D point पे भी it is remaining same 2.08 ही रहे तो यहाँ पर आएंगे 2.08. सो ये भी D पे भी सेम रहेंगे. अब D का right hand side direction पे जब जा रहे हैं तो ये माइनस पे जा रहा है तो ये यहाँ पर माइनस 57.92 किलोन्यूटन हो रहा है. और जब B पे पहुँचते हैं तो 80 पे पहुँच रहा है -80. सो ये पॉइंट पे हम -80 बनाएंगे 80.42 किलो न्यूटन. लेट्स जॉइन दिस लाइन here and then 80. So this is minus, I have plus here, let's shade it. So this is my shear force diagram. Okay, now similarly let us find bending moment calculation also. So number 3, bending moment calculation. Okay, now bending moment के लिए simply supported beam के लिए क्या होता है, supports पे 0 आते हैं तो moment at A will be equal to moment at B will be equal to 0. अब moment at C point पे और D point पे find करेंगे तो moment at C will be equal to, अब ये reaction RA force C की तरफ कैसे जाएंगे,
ऐसे जाएंगे. कौन सा डायरेक्शन है ये? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर कैसे जाएंगे? ऐसे. और ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज. सो आर ए इज गोइंग क्लॉकवाइज. इट इज़ पॉजिटिव 82.08 इंटू उसका डिस्टेंस सी तक, सिर्फ सी तक ही जाना है, तो दैट डिस्टेंस इज 1.5. अब नाउ UDL इज गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज. माइनस 20 into distance is same again 1.5 into 1.5 by 2. So this will be coming equal to 100.62 kilonewton meter. Okay, now let us find moment at D. Moment at D. अब मोमेंट एट डी के लिए भी सेम डायरेक्शन सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर एक और लोड ऐड होगा, ये सी का लोड. क्योंकि हम डी तक जा रहे हैं तो ये पूरा इतना डिस्टेंस पूरा कवर करना पड़ेगा. सो बीच पे ये सी का लोड भी कवर हो रहा है, तो ये सी डी की तरफ कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे. और ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज. सो 82.08 इंटू, अभी डिस्टेंस चेंज होगा डी तक. So from here till D it is 3 meter. 3 minus 20 into 1.5 into up. 20 kilonewton per meter load is acting only till 1.5 meter और बाकी का 1.5 meter we need to add it. So कैसे add करेंगे? It will be 1.5 divided by 2 plus the excess distance 1.5. Right? So next we have point load going in anti-clockwise direction, so minus 50 into the remaining distance is 1.5. So if you calculate all of this, moment at D will be coming equal to 103.74 kilonewton meter. Okay, now with this let us draw the bending moment diagram. So at supports, which is A and B support, we have zero bending moment, right? Now at C point it is 100.62. So we have 100.62 kilonewton meter, 100.62 kilonewton meter, and at moment at D is coming equal to 103.74. So it is little more, 103.74 kilonewton meter. So अभी यहाँ से यहाँ तक it is UDL, so you draw a parabolic line, right? Now from C to D there is no UDL, there is a point load. So for point load it will be straight line, and again from D to B again a UDL is acting, so it will be parabola. So your bending moment diagram will look something like this. This is positive. Let me shade it. Okay, so this is my bending moment diagram. So I hope this numerical is also clear. I'll see you with more numerical in next session.